I hope you all are doing fine. So, without wasting any further ado, let's move on with our class. I hope my screen is also visible to you all. Yes, So, it is. yes, um, till now we have covered with six, I guess, seven topics, and I hope nobody from you have any difficulty in any topic. If anyone is facing any such issues in installation or in the code, please reach out to me. Uh, we also have a dedicated team to handle your errors and difficulties. So if you're facing any error or stuff like that, just don't hesitate. So with that, yesterday we have covered up with numbers. So what we saw, how to declare a number object. In the similar pattern, day before yesterday, we have also seen how to declare a string in the form of an object. Similarly, in yesterday's class, we have also deal with how to convert a number into a string, then how to round off a number, then how to, you know, so this were the pretty much basic operations we performed using number methods. So it was a basic class yesterday. So in today's class, what we are gonna do is we will be exploring the math library, which is a built-in library in JavaScript. You don't have to import it as such. You can just directly call it by using math keyword, and then whatever method you want to use, you can just, after putting the dot, you will see there are a number of methods: square, max, round, floor, square root. So you can just check it, and as you require it, you can use it. So with that, let's check what math library offers us. So first and foremost, we'll see that what if in case I have a negative value and want to convert it into a positive value. So if I have, let's say, let neg number is equals to -5, okay. So I want to convert it into a positive, an absolute value. So how can I do that? I will just use my math library. I will call it math.abs, and I will pass the negative value. So what it does is it converts my negative value to a positive value. So as I should get an output as 5, so I will just console log this. I'm getting the output as 5. Here's one as well. What if I just write it here 5? So will it make it as -5, or it will just remain 5? A question for you. It will remain 5 only. It will remain 5. Let's check it out. And I couldn't see any output. Let me just run it once more. Yeah. So you could see it as we are getting the output as 5 only. So it's not like if you are passing -5, then it is giving me 5, and if I'm passing just 5, it will give me -5. It's not like that. The absolute method which is been provided by my math library is always deals with negative numbers. So I hope that's clear to you all. Let's move on to our next method. The next method says, what in case, okay, let any number, I can say point number is equals to 4.6, okay, 4.5, and let's take it as, for just for this example, we'll take it as 4.6, and I wanna round it off. So how can I do it? Console.log, I will call the math library dot round, and in that I will pass the variable. So what it does, we'll just check it. It rounds off the number. So what in case I have here 5, 4.5, so it will still give me 5. But what in case
if I have it 4 over here, so it will give me 4. So a point less than 5 will give me the floor number. That means ki a less number. It will round off to the less degree, and if after point I have value greater than 5 or greater than or equals to 5, it will round off to a greater decimal, greater precision. So less than 5, it will round off to the floor value, the less value as I'm getting here as 4, and greater than 5 or equal to will give me the seal value. It will round off to the uh, nearby greater value. I hope that is clear to you all. I also have another method for the same. Let's take the same example. Here in case if I just have 4.4, you saw that in the math.round method, it's giving me uh, the lower value, means it's just rounding off to 4. But what in case if I get any, like if I here get 1 also, if I get here 0.5 also, after decimal, if I get in anything after here, it should round off to me to a greater C, to a greater value. So how can I just do that? I can use another method which is mat.seal. So what mat.seal does is, can just imagine the ceiling where our fan is there at the top of the, like, where our fan hangs. So we call it as seal. Seal means top. So it will always round off to the top value, the greater value. So I guess what should be the output of this? It should give me the output as 5. So let's check if we are getting the same output. Yes, so we are getting the output as 5. So no matter what you provide after the decimal, it will always round off to a greater value. See, I'm getting it as 5. And meanwhile, we also have a method which says that no matter after the decimal point what you have a greater than 5 number. But what if I want to reduce to the minimal value? So for that, I have mat.floor. So what mat.floor does is, floor means bottom, less value. So it will round off to the less value. So here in this case, I would get the answer as 4. So let's see if I'm getting it as 4 or not. So yes, I'm getting it. So I hope the mat.floor and mat.sail is clear to you all. What in case I've got a random values, like 4 to 5 values, and I have to find a minimal value from that. So we have also got a separate method for that to deal with such cases. What I can do is, let's suppose I will just console log that math dot, first of all I will take some values. Let's say I have 4, 5, 2, 3. Okay, I want to check which is the minimum value from this all. So how I can do that, can use the math library, math dot give me the minimum value. I will just pass the random values to it. It's still giving me an error because I have used one more parenthesis, an extra parenthesis. Now it looks pretty fine. So just console log this, and I should expect an output as 2. Let's say I'm getting it as 2. 5. 5, Let's see, I'm getting the output as 2. And here, if in the case of math, if I use math, so it should give me an output as, it should give me the output as, yeah. So yes, it's giving me the output as 5. I hope this is also clear to you all. Let's move further. Now the most important thing comes. Now the actual class starts. From this point, just pay an extra attention. So what in case I want to generate a random number? With the help of math library, you can do that as well. So how can we do that? Uh, let's store that random number into any variable. I will name it as random number. I can use this method as math.random.
So what it does, it returns me a random number between the range of 0 to 1. Yes, you heard it right. I guess I've already used this variable somewhere else, so I will just name it as random number 1. That's fine. So in this case, what this random method returns me, it will return me a random number between the range of 0 to 1. So it can be 0, it can be 1, and it can be any number between 0 and 1. It can be 0.000001, it can be 0.5, 0.7, 0.9, 1. The point is clear to you all. So I will just console log what the first file I'm getting over here is console.log, and give me the value which has been stored in the random variable 1. I will just check the output, and as we can see, we are getting the output as 5.3 0.5348 blah blah blah. So it's giving me a very big number. Let's try it once more. So the second time it's giving me another number that is 0.20184 something. Okay, and the third time it's giving me another number that is 0.93. So I hope the point is clear to you all. What it is doing is it's giving me uh, a random number. As soon as I run the program, it's giving me a random number, a new random number every time I run the program. So, but in this case, you could just see I'm getting the number very big, a very big number. So before this only we have learned we can use mat.round, mat.floor, mat.max to reduce this number or to round off this number. So in this case, it's pretty much good to use a random this method to rounding off the number, because I don't want such a big number. So in this case, what I will do is I will just wrap my random method into another maths method, math dot. I could just round it off to the minimum number. Okay, we'll just round it off to the minimal number. So I have used math dot floor. So what it will do now, it will always give me a number, a less value, a randomly generated value, and it will reduce to a less number. So if we just console log, here I'm getting it as 0. I will again get it as 0. I will again get it as 0. Why I'm getting it as 0? Because if you have seen before this, it was giving me a value 0.5, and after using the match.lower method, we know that if the number, no matter if the number is 0.9, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.1, it will always reduce to the minimal value. So that's why in this case we are getting the value as 4. So to avoid this case, I don't want the value just 0. I want the value a decimal number. If it is giving me 0.5, I just want 5. I don't want a whole number. So in this case, what we can do is, firstly, if I just want a random number between maybe between 1 to 10. Okay, let's take an example. I want a number between 1 to 10. So we know that after using mat.random method, I'm getting a number like between 0 to 1. And what if I just multiply this number with 10? Whatever number being generated by mat.random method, and if I just multiply that number with 10, what it will do, if I multiply this number with 10, it will give me 5. Okay, if I have another number, like let's suppose here if I have 0.2, so if I multiply that number with 10, it will give me 2, it will give me 5, it will give me 9. So meanwhile we are getting what we want. We want a number between 1 to 10. So after multiplying the mat.random item, that gives me a value between 0 to 1. If I multiply that with 10, it will of course give me a value between 1 to 10. I'll just run it. I can show you that yeah, we are getting is 3.5, 0. What's this now? 1, 7. Then if I just run it again, 1, 9. So you can see that I'm getting a number between 1 to 10.
or you can say 0 to 10. So I don't want this also. This is, I don't need this. I just want a fixed number between 1 to 10. So here, now in this case, I can use that method math.floor, or you can use random also, but here in case I will use it math.floor because I want the minimum number. I don't want to round off the number like a greater value or the in this case I just want a minimum number. So if I just run this again, so I could see that now it is getting me the perfect value. So here I'm getting 2, 2, 8, 2, 4. So it's generating me a random number between 0 to 10. But I also don't want this 0. See, I'm getting it as 0 because I know that this math.random method will generate me a number between 0 to 1. But I don't Yes. want this 0. I want a number between 1 to 10 only. I don't want this 0. So what I could do is I will just add 1 here. Okay. What I will do is I will just add 1 here. So there will be none case. If it is giving me 0 also, it will add 1 to it. So there will be no such case wherein I will get 0. It will be always, the number will be between 1 to 10. Yes. Okay. If I just Yes. Yes. check it now, if I run it, no matter how much time I run it, it will always give me a number between 1 to 10. It won't give me greater than 10 or less than 1. See, as, as you could so see that it's always giving me what I want. So I hope till this point this is making a sense to you all and you don't have any problem. Everything is fine, because this is the thing, our today's class is completely dependent on this single line. Instead of If -1, you we have a can single do doubt in +10. this, just tell me. Anyone? No doubt? Clear everything? Instead of -1, we can do +10. Okay, so that's it. We'll move on a bit further. So I hope you're clear with this. Just like I would like to add one more thing to this. But in case, if you're able to make a logic, that's pretty good. We have generated now. We saw how to generate a number between 1 to 10. So what if I want a number between 10 to 20? So how can I do that? We know that we will be requiring the math library, but if I want to generate a number between 10 to 20, so can you build a logic? What number between 10 to 20? Yes, please. Somebody just spoke something, but it was not audible. Durvesh, your voice is breaking. Can you just type it in the chat? And others also use their brain. I know that somewhere, like if I'm just storing it in a random variable, let random variable 2, let's suppose, and I know that I will be requiring this math dot random method. Okay, so what more I will require is this will give me a random value. तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 10 से ज़्यादा एंड 20 से कम. तो मैं अभी इसमें क्या और ऐड कर सकता, सब्सट्रैक्ट कर सकता, मल्टीप्लाई कर सकता, so that I get a number between 10 and 20. Instead of -1 we can do, we are not doing -1 anywhere, we are doing +1 only, Durvesh. No, +10. +10, okay.
we can check it out. So you are saying that the similar equation will work out here, but only what I have to do is in the place of 1 I have will add 10. Same thing you are saying, right? So you are saying that here instead of adding 1 I will add 10. I also don't know whether this will work or not, but let's check it out. I will have to console log this. So I'm getting it as 11, I'm getting it as 10. Also I'm getting the value as 10. I don't want the value as 10. I always want the value as bit. Okay, 10 will also work now. 10 will also work, no problem. 12, 15, 11. So yeah, it's working fine. 13, 13, 13, 19, 18, 16. So yes, it's working pretty much good. So yes, this was it, like a kind of pretty much good logic. So if I just add 10 over here, I'm getting a number, expected number between 10 to 20. So yeah, it's working fine for now. Yeah, you can do this. This also, like I just have to replace this 1 by 10 and I'm getting the output as 19. Let's see the logic. Math.random will generate me a number between 0 to 1. Okay. So 0 to 1, yeah. And I'm rounding off rounding off will come later. Before that I'm multiplying this with 10. So I know the value will be somewhere between 0 to 10. Okay, after multiplying it with 10 the value will be somewhere between 0 to 10. Okay, and 0 to 10, after that what I'm doing is I'm adding 10 to it. So what it will do is 0 to 10 plus 10 means the value will be between 10 to 20, राइट. 0 to 10 में अगर कोई भी वैल्यू हमारी लाई कर रही है और हम उसमें 10 ऐड कर रहे हैं, तो अगर 0 भी रहा, मिनिमम वैल्यू भी 0 रही, तो मैंने उसमें अगर 10 ऐड किया तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट. और अगर मेरी मैक्सिमम वैल्यू 10 भी रही तो मैंने उसमें फिर से 10 ऐड किया तो मेरा क्या वैल्यू आ रहा, 20 आ रहा, राइट. और मैंने उसको क्या किया है, सबसे कम डेसिमल पर उसको राउंड ऑफ किया है. प्रिसीजन वैल्यू मेरी मिनिमम रहनी चाहिए. So yeah, it is making a sense. So you just have to use your logics like this. There is another way to do this. So this is also right. I'm not saying this is wrong. This is the a very good way to do it. But in case I have given anything like I want to take the input from user and I don't know whether the user will give me 10 or 20, whether the user will give me the minimum value as 10 or and maximum value as 20, or whether he will give me as minimum value 50 and maximum value 100. So in this case, let's imagine that we haven't taught function yet, but just imagine this is a function, and in the function I'm passing two values. One is minimum and second is max, and based on this I have to perform the operation, and this function should return me this is the name of my function which says min max. So this is how the syntax is. This is, we have to write the keyword as function and the name of the function. The function will have some name. Through this name only we are going to call this function. And in the function I'm passing two parameters. The first is minimum value. This will be the minimum value the user will pass. If suppose I have any user, I have Durvesh. Durvesh is giving me the value as the minimum. I am saying that the value should be 50. I am saying that the maximum value should be 100. So my number should lie between 50 and 100. So in that case we have a general formula. I will just let you take to the website. I will just search it. Like I don't know the formula, exact formula. If in case if I don't know the exact formula, what I can do is I can just go onto my website, onto my browser. I will search min max value find karo using math
library in JS. And here I can see that MDN document maths dot. If I will just go to, I don't know, I will just see this is there in my math library only. If I just enter this and the second math JavaScript. So in this documentation, if I'm not wrong, they should provide me a min max example. Yeah. So returning a random integer between two bounds. So this is the only case we are dealing with. We are having two bounds, two nodes. One is the minimum and second is the maximum. So in that case, I can just use this formula. So what this formula will do, I will just copy paste this example because I will discuss it into the VS Code. Just comment this out and yeah. So we have this example with us. We have a function. The function name is random. It's taking the minimum value and a maximum value. Okay. So for now, I'm just commenting out this. We are not like at the position to call out the function. So in a constant variable named num, and that what we are storing is mat dot float तो पता है कि वो minimum value पे उसको लेके जाएगा. mat dot random भी पता है कि वो क्या करेगा, random number generate करेगा. So we are multiplying mat dot random. अभी तक हमने उसको किससे multiply किया था, 10 से multiply किया था. But we have a generalized formula here which says max minus min plus 1. ठीक है, max minus min plus 1. अगर मेरी max value suppose 20 है, min value suppose 10 है, तो max minus min कितना हो गया, 10 हो गया, plus 1 मतलब 11 and then plus min. In the previous example, if you see, there was a single term missing, that was 1. इसमें हम add to 10 कर रहे थे but plus 1 करना पड़ेगा क्योंकि I guess this equation will give me the output limited to only 19, but just check it, I'm not confirmed. But here in this case, what if I just use the logic, max is, let's suppose my max is 20, min is 10, so max minus min कितना हो गया, 10 हो गया, plus 1 11 हो गया. उसमें हमने क्या किया, प्लस क्या किया, min किया, तो हो गया plus 10, तो हो गया 21, multiplying with this and rounding off to to minimum value. So this is a generalized formula. You just have to understand it. Once you will practice it, you will get like what is the logic going on in the background. Max minus min plus 1 plus 10. Max minus min plus 1 plus min. I hope this is clear to you all, and we will just test it once. This is working fine. So I want a number between 1 to 10. I'm passing the minimum value as 1. This will be going to stored in minimum variable, minimum parameter कह दो या attribute कह दो, and this 10 will be stored in my max. ठीक है, I'm calling this function with its name. The name is random. So in this case, what it will do nothing. It will call, it will run, but we are not going to see any output because I'm not console logging it. I can directly console log what this function is returning to me, what will be a random value generated by this function. But for now I will be storing it into any variable generated outcome, और उसको मैं क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा generated outcome. So you can see that yeah, I'm getting it as 1, I'm getting it as 7, I'm getting it as 2, I'm getting it as 10. See, और मैं इसको अगर लिमिट को एक्सटेंड भी कर देता हूँ, अगर लेट्स सपोज आई वांट 50 और मेरे को 100 के बीच में चाहिए, तो क्या ये मुझे भी सही आउटपुट देगा? यस, इट इज गिविंग मी द राइट आउटपुट. 93, 59, 59, 56. So yeah, it's working fine. So this is how we deal with the things. Math.random is really an interesting, fabulous library. You can perform a number of operations using this. अभी के लिए स्टोरी सबको क्लियर है. वैसे हम ये वाली इक्वेशन तो अभी नहीं यूज करने वाले, बट ये I will be going to provide questions based on this equation in your assignment, so you should be familiar with it. अभी starting में क्या होगा तुमको, the people like most of the people 3. this will be a new concept. तो starting में मैंने कहा था जो भी हम
पहली बार किसी नई चीज़ को देखते हैं तो 1. स्टार्ट में हमारी आँख में जलन होती है, हमारे सिर में दर्द होता है, बट वो चीज़ जैसे बार बार आपकी आंखों के सामने से जाती है, यू विल बी गेटिंग फैमिलियर टू इट। सो अभी का कैसा कर लो, अभी का हाँ ये चीज़ है, फिर देन इसको आप 2-3 बार अगर देखोगे तो उसको आपको उसके पीछे का रीज़न भी समझेगा कि हाँ ये चीज़ क्यों है। तो अगर स्टार्टिंग में ही ये इल्यूजन रहता है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि हमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन करना चाहिए कि ये चीज़ क्यों ऐसी है, हाँ मेरे को पता करना है। हाँ, सही तरीका है, हमको क्वेश्चंस रहने चाहिए, हमको कुकिंग इंटरेस्ट रहना चाहिए कि हाउ दिस थिंग्स एक्चुअली वर्क्स इन द बैकग्राउंड, बट द फर्स्ट थिंग शुड बी इफ इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, आई थिंक दैट इन द foremost अप्रोच, आर फर्स्ट अप्रोच शुड बी हाँ ये चीज़ है तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, हाँ ये चीज़ है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ पहले तो कि हाँ बाबा ये चीज़ है, तो अब जाके आप उससे फैमिलियर हो गए। उसको आप अगर पहले से डिनाई कर दोगे एक्सेप्ट करना तो यू वोंट बी एबल टू गेट द लॉजिक। तो हियर इन दिस ये चीज़ ऐसी है, इसका लॉजिक मैं समझूंगा, आप 2-3 बार इसको खुद ट्राई करेंगे, ट्राई एंड रन करेंगे, Yes, you are तो audible. you will also be able to get familiar with this. So with that, now it's time to move on to our amazing website. I will just show you the trial how our website looks like. I have also given this trial you yesterday also. This is the kind of styling I have provided, but as such we are not going to require any styling because HTML and CSS is not our focus. Okay? We are gonna build a logic in JavaScript, so we won't be dealing much with HTML and CSS in today's class. But yeah, let me give you a trial. What it says is we have selected, means the computer has selected a random number between 1 to 10. See if you can guess it. So I have to provide a number between 1 to 10. And let's see how many chances or guesses I have to make to guess the right number between 1 to 10. So for the random thing, I will just put a number 5, and it's, oops, sorry, try a smaller number. Okay, saying so I will try 3. Okay, so try another smaller number, 2. Congratulations, you guessed it right. अब मुझे इसमें 4 अटेम्प्ट लगे हैं in 4 guesses, no यार, 4 guesses should not be the right. So there's a bit mess with the logic here, because I guess मैंने से 2-3 ही guesses में attempts में मैंने right logic prove कर दिया था, so there's a bit error in this, but we will find it out what is the error. So let's try building up our code. Those who are parallelly coding with me, they will have an amazing experience and can idea about how the things actually works in HTML, CSS, and JavaScript. So I just wanted to know that how many of you have before this, familiar with HTML, CSS, JavaScript coding parallel and integrating the logic together? Yeah, Tanvi, you raised your hand. My question was कि how many of you are familiar with HTML, CSS, JavaScript working together integratedly on the simultaneously project? I hope my voice is audible to you all. So answer my question, buddy. Yes, Tanvi. Okay, you are raising the hand saying that yeah, we are familiar. Okay, I get it. Rest others are not familiar. I assume that. So don't worry. Those who are familiar, it's going to be just can say a cup of tea for them today. And for those who are not familiar, for them that will be a great learning. So with that, let's move on. It's already 6:40, guys, so I will try to wind up the session in the next half hour if possible. I'm not saying we will require more time also if things doesn't go right, because I don't know, I have just not practiced this code pretty much. So I'm just gonna code it randomly. We have the logic with us. We have some basic knowledge of HTML, CSS, and a bit things about whatever we have learned in JavaScript till date, we will be using the same. So here I will just name my file as GUE guessing 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 game.html. So you have to name the extension file as .html.
because when we are going to run it on browser, so we will need the HTML file. Press enter and you will be into your HTML doc. So here what I can do is I will just put an exclamatory mark. So as soon as I post the exclamatory mark, so it's giving me an emit abbreviation. So this is the basic syntax, or say the basic things you will require to start your HTML page. That is saying the char set, and then the meta. This is whole which comes in my head. It's the metadata of the website, which is the metadata of my website, the whole body. And then you have in the body section, you will have your logic and whatever stuff you want to display to your HTML or say the web page. So after pressing the exclamatory mark, after typing the exclamatory mark, I will just press enter. So it's giving me a basic template, and I don't have to worry much about it. Though the people who are not familiar with it, just don't think much. Yeah, so here in this case of title, what you can do is, okay, just leave it out for a while. In the body section, I'm putting an h1 tag. Okay? h1 tag क्या रहती है, देखो header tags रहती है अलग अलग, जैसे हम अगर word किसी ने we use the PowerPoint, we use the Excel, we use the Word. So their word we have their heading tags, how to head, how to capitalize, how to bold. Similarly, h1 tag is the biggest tag. इससे ये एक ऐसे टैग रहते हैं जो उनको हेडिंग प्रोवाइड करते हैं. We have h1, h2, h3, h4, h5. ठीक है. Similarly, in this case, I will be going to use h1, which is a heading tag. Or let's suppose I will just put any guessing game. So if I want to Yes. Yes. see the output, I have an extension called live server, which enables me to It's okay. see my output on the web page without any reloading. If I'm making any changes into this page, it will automatically get re-render on my website, on my web page. So if you don't have, just go. If you don't have this extension, what you have to do is you have to just go into your extension what we call extension session, and here you just have to search live server and the first one which have the maximum download, that is 12 something million or 41 million this has. So you just have to go here and download it. I already have it installed, so if in case you don't have, you just install it. And let's move on. So here I have used an h1 tag and it's giving me the output as guessing game. If I just use here another any tag, like if I want to use h2, okay, so it's giving me a bit smaller font, h3 उससे भी छोटा, h4 उससे भी छोटा, but in this case I will prefer to use h1. I hope this makes a sense. और क्या लगेगा मुझे, एक मैं पैराग्राफ, लाइक हमने ओरिजिनल पेज पे देखा था कि एक पैराग्राफ दिखा जो हमको थोड़ा सा रूल्स प्रोवाइड कर रहा था कि आपको क्या करना है. सो एंटर, क्या रूल था, एंटर नंबर. इन दिस केस आई विल से एंटर नंबर बिटवीन 1 to 10. 1 to 10 कर देता हूँ, ठीक है. तो हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर गेम बिल्टअप करने वाले जिसमें हम एंटर करेंगे वैल्यू बिटवीन 1 to 10 और कंप्यूटर भी गेस करेगा वैल्यू विद द हेल्प ऑफ यूजिंग math.random मेथड. वो भी गेस करेगा, हम भी गेस करेंगे, दोनों को हम मर्ज मतलब इक्वालिटी की साइन से चेक करेंगे कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट. इफ दे आर इक्वल वी हैव won the game in whatever attempts, and if not then we will again run our loop again and again and see how many times chances we require to match the output what computer has guessed. So this is the pretty much basic logic. So yeah, I hope my screen is visible to you all. The font is fine now, like should I increase the font?
जो भी लोग मोबाइल पर देख रहे हैं उनको थोड़ा सा इशू आएगा. ओके, I guess it is fine. Okay, so I have used an h1 tag. Similarly, I have a paragraph tag also. In the same way, what we have used the h1 tag, same way we have to use the paragraph tag also. Paragraph tag क्या करेगा, ऐसा कुछ भी तुमको paragraph वगैरह लिखना है तो उसका small text रहेगा in the form of paragraph. ठीक है, not much important thing to be discussed. उसके बाद मुझे क्या लगेगा, मैंने उसको एक हेडिंग दे दिया, मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया. उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ऑफकोर्स एन यूजर विल एंटर सम वैल्यू, तो उसके लिए मेरे को इनपुट टैग लगेगा, एक इनपुट बॉक्स लगेगा जहाँ पर यूजर एंटर करेगा वैल्यू. तो वी हैव एन इनपुट टैग फॉर इट. इफ आई जस्ट press INP, automatically it will suggest me that are you gonna use the input tags. I will say yes, press enter. यहाँ पर मुझे टेक्स्ट तो चाहिए नहीं, ऐसे मुझे क्या एक नंबर चाहिए. उसका टाइप क्या रहेगा, मेरे को इसके इस इनपुट टैग के अलग अलग टाइप रहते हैं. नंबर रहता है, उसके बाद टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट में हम स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी पास कर सकते हैं. उसके बाद देन वी हैव द ईमेल आल्सो, पासवर्ड भी रहता है. इन फ्यूचर वी विल बी श्योरली यूजिंग दिस, बट अभी हम HTML का सेशन नहीं कर रहे हैं, सो आई विल जस्ट इग्नोर. अभी का ऐसा मुझे नेम की ज़रूरत नहीं है. नेम क्या रहता है, डोंट हैव टू वरी. आईडी की मुझे ज़रूरत है. आईडी क्या रहता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए. जैसे तुम्हारा कॉलेज का आइडेंटिफिकेशन रहता है, ठीक है, तुम जैसे भी उस नंबर को डालते हो, तुम आप जैसे भी आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हो, कॉलेज के अकाउंट सेक्शन में जाते हो, आप उसको आईडी देते हो अपना, ठीक है, यूनिक आईडी. तो वो क्या करता है, आपका सारी डिटेल्स फेंच कर लेता है, आपको पूरा एक्सेस कर लेता है थ्रू योर आईडी. सिमिलरली हमको अगर इसको यूज़ करना है, इस इनपुट टैग को इन फ्यूचर मेरे को यूज़ करना है, इससे डेटा लेना है, तो वी हैव टू गिव इट आईडी. सो हियर आई एम गिविंग इट एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन सम नेम. ये मेरा इनपुट टैग है, तो मैं इसको सिमिलरली कुछ नाम दे देता हूँ. लेट्स सपोज इनपुट वैल्यू दे दूंगा मैं इसको अभी का. तो इसी नेम से हम इसको आप याद रखें, इसी नेम से हम इस फ्यूचर में इस टैग को यूज़ करने वाले हैं. तो देख सकते हैं हम यहाँ पर कि हमको एक हेडिंग आ गया, हमको पैराग्राफ आ गया यहाँ पर. देन आई हैव समथिंग हियर टू एंटर द वैल्यू. और इसके सामने मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ रैंडम की. ये क्या रहेगा मेरा, एंटर केस. सी इट्स लुकिंग फाइन नाउ. अभी का मैं जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक वेब पेज बिल्ड कर रहा हूँ. मुझे यहाँ पर ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है वेब पेज में कि कैसे थिंग वर्क कर रही है, बट हाँ इतना आपको समझना चाहिए कि थिंग कैसे चल रही है यहाँ पर. Here I could have used the paragraph tag also, but अभी का मेरा काम बन रहा है इससे, तो मैं क्यों ही फालतू में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाऊँ, राइट. सो अभी मुझे एक हेडिंग मिल गया, एक पैराग्राफ मिल गया, एक मस्त इनपुट टैग भी मिल गया. और क्या रहेगा, और एक चीज़ लगेगी, मैं जैसे इसमें कुछ भी वैल्यू एंटर करूँगा ना, मेरे को इसको सबमिट भी करना है, तो ऑफकोर्स मुझे एक सबमिट बटन भी लगेगा. सिमिलरली इनपुट टैग ही हमें प्रोवाइड करता है सबमिट बटन, ठीक है. तो मैं इनपुट को फिर से यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा टाइप क्या रहेगा, सबमिट रहेगा, ठीक है. तो जैसे मैं करता हूँ आई गेट अ सबमिट बटन यहाँ, जो भी क्लिक वगैरह भी हो सकता है, बट अभी इसकी फंक्शनलिटी वगैरह कुछ है नहीं. इसको मुझे नेम वगैरह की ज़रूरत नहीं है फिलहाल. तो हाँ, आईडी की मेरे को ज़रूरत रहेगी क्योंकि मेरे को इस बटन को भी एक्सेस करना है, तो मैं उसको कर दूंगा सबमिट बटन. फिलहाल के लिए सब सही है. आई गेस किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मैंने हेडिंग टैग यूज़ किया, पैराग्राफ टैग यूज़ किया, उसके बाद इनपुट टैग यूज़ किया ये वाला, और जैसे हम वैल्यू को इस पर इनपुट करेंगे मैंने एक सबमिट बटन यूज़ कर दिया. सो बेसिक का भी सही है. स्टाइलिंग वगैरह में अगर तुमको जाना है तो स्टाइलिंग का भी आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं. हाँ, रही बात इस टाइटल टैग को डिस्कस करने की, तो ये हमारे हेड टैग में आता है जो कि मेटा टैग रहता है इस वेबसाइट के बारे में. तो यू कैन सी हियर आई वांट टू चेंज द नेम हियर. यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नेम है ना, अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो आई कैन चेंज द टाइटल. तो मैं इसको गेसिंग गेम कर देता हूँ अभी का, गेस की. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप नाम चेंज होकर आएगा, डॉक्यूमेंट्स को गेस गेम चेंज हो चुका है. दिस इज हाउ वी यूज द टाइटल टैग. बेसिक था, कुछ इतना है नहीं. अगर मेरे को स्टाइल यूज़ करनी है तो आई कैन यूज दिस स्टाइल इन माई हेड सेशन. तो बॉडी सेशन में नहीं उसको यूज़ कर सकता. मैं क्यों नहीं यूज़ कर सकता, क्या रहेगा, तो वो नहीं डिस्कस करने वाला मैं फिलहाल, तो टाइम बहुत कम है. तो यहाँ पर मैं इन दी हेड सेशन आई एम गोइंग टू यूज दी स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट क्या रहती है, भाई तुमको जो भी स्टाइलिंग देनी है तुम्हारे पेज को, वो तुम इसके अंदर यूज़ कर सकते हो. तो स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट नहीं रहता, वो स्टाइल रहता है. स्क्रिप्ट कब यूज़ कर सकते हो तुम, स्क्रिप्ट तुमको जब भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो तुम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करोगे, और तुमको स्टाइल देनी है कुछ भी पेज को तुमको, तो तुम स्टाइल टैग यूज़ करोगे, ठीक है.
इस तरीके से रहती है स्टाइल टैग। एंड मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरा जो पेज है इट्स नॉट गेटिंग रीलोडेड, हो गया रीलोड। तो अभी मैं इसके अंदर जो भी मैं स्टाइल दे सकता हूँ बेसिकली मेरे पेज को, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर पूरे बॉडी को, ये जो रहता है ना, सी गाइस, ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा वेब पेज है इसको तुम कहते हो बॉडी। इसके अंदर जो भी ये पूरा का पूरा है ना, इतना ये इतना सेशन, इसको तुम कहते हो बॉडी। अगर मेरे को इसको कुछ स्टाइलिंग देनी है, लेट सपोज मैं इसको बॉडी के नाम से एक्सेस कर सकता हूँ, बॉडी, ये हो गया तुम्हारा बॉडी। तो मैंने अभी पूरे बॉडी को यहाँ पर एक्सेस कर लिया। तो इसको अगर मेरे को स्टाइल देने, फॉर एग्जांपल मेरे को सबका फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, तो मैं फॉन्ट कैसे चेंज कर सकता हूँ, आई हैव प्रॉपर्टी कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में अभी सैंस सेरिफ ले लूँगा, देखो फॉन्ट चेंज हो गया। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं बॉडी को एक मार्जिन दे सकता हूँ। मार्जिन अगर मैं 20 पिक्सल दूंगा तो कैसा होगा, हाँ सही लग रहा है फिलहाल तो। उसके बाद मैं पैडिंग भी दे सकता हूँ 10 पिक्सल, कैसा लगेगा, फिलहाल के लिए सही है। वैसे कुछ दिख तो अच्छा नहीं रहा है बट ठीक है, 5 पिक्सल दे देता हूँ, ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसको दो ही ना तो, हाँ यही सही लग रहा था यार। पैडिंग मुझे थोड़ी सी इसको लेफ्ट से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग लेफ्ट कर दूँ और 5 पिक्सल लेके देखता हूँ। हाँ सही लग रहा है, 10 पिक्सल ठीक है यार, इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा बट चलेगा अभी तो मेरे को। तो दिस इज हाउ यू दिस स्टाइलिंग वर्क्स, ठीक है, मेरे को सिर्फ बेसिक आइडिया देना था कि स्टाइल कैसे वर्क करती है। most of you might like most I know that most of you are familiar with this, but for those who are not, this is a quick overview. If you want an in-depth means a quite intermediate tutorial of HTML and CSS, just you can type in the group. If minimum maximum students are like they want to have the knowledge about this, we will have a separate dedicated one shot session for HTML and CSS also, but it depends on you how much you want to learn. फॉर नाउ तो इट्स फाइन, ठीक है, मैंने एक हेडिंग दे दिया, उसके बाद पैराग्राफ दे दिया, एक क्या कर दिया, उसके बाद एक रैंडम टेक्स्ट दे दिया, यहाँ पर एक इनपुट टैग दे दिया, एक सबमिट बटन दे दिया। फिलहाल के लिए मेरा HTML CSS का काम कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरे को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं और मैं लूँगा भी नहीं। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आऊँगा मैं एंडिंग में, ठीक है। हम हमेशा जो स्क्रिप्ट टैग रहते हैं ना, स्क्रिप्ट टैग मतलब जो भी मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा उसको मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखता हूँ, वो हमेशा एंडिंग में लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ एंडिंग में, क्योंकि हमेशा मुझे क्या चाहिए कि मेरा HTML और CSS जो है स्टैटिक जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी है मेरा, वो सबसे पहले लोड हो, और उसके बाद सब ये कुछ लोड होने के बाद उसके बाद मेरी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटीज लोड। so for that sake I always use my script tag at the end of the page, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरे स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करूँगा। स्क्रिप्ट टैग सिमिलरली जैसे हमने स्टाइल CSS के लिए यूज़ किया था स्टाइल टैग, वैसे अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसको पूरा रैप कर देता हूँ। अभी तक अगर सबको क्लियर होगा, अगर कुछ भी डाउट है तो टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन जस्ट आस्क। ओके, तो अभी मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर हूँ, तो एकदम हम बेसिक से, एकदम जैसे किसी को हमको कुछ भी पता नहीं है, हम सिर्फ एकदम बेसिक से लॉजिक बिल्ड करना शुरू करेंगे। एंड सिमिलर साइमल्टेनियसली हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या हमें एरर्स मिस्टेक्स हम Yes, sir. इनिशियल स्टेज पे करते हैं। आई विल रिपीट द सेम मिस्टेक्स विच आई हैव डिड एट द इनिशियल टाइम, सो दैट आपको एक आइडिया हो कि कैसे चीज़ें होती है परफॉर्म। तो सबसे पहले मेरा लॉजिक है कि हाँ, सबसे पहले तो एक कंप्यूटर में नंबर जनरेट करना चाहिए, कोई भी रैंडम नंबर, और उसको मैं चेक करूँगा there's a problem with my laptop. If anybody is able to see the cursor is blinking, I don't know why it is blinking, but there's some problem. Okay, so अभी हम करने वाले हैं रैंडम नंबर जनरेट, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर पहले सबसे पहले ऑफकोर्स कंप्यूटर ने रैंडम नंबर जनरेट करना चाहिए, देन मैं मेरा गेस दूंगा, फिर वो दोनों को हम इक्वालिटी साइन से चेक करेंगे। सबसे पहला काम क्या है मेरा कि कंप्यूटर जनरेट करे एक रैंडम नंबर, सबमिट बटन दैट इज माय फर्स्ट टास्क। तो मैं क्या करूँगा, उस रैंडम नंबर को इनपुट वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो लेट एक्स हो गया हमारा, जो कि कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया।
और एक अच्छा मैंने कहा था आपको कि हमको एक्स वाई अगर इस तरीके से अगर हम वेरिएबल्स को नेम देते ना तो इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। तो मैं क्या करूँगा, लेट कंप्यूटर GENERATED जनरेटेड नंबर इक्वल्स टू, ये मैंने सिर्फ क्या कर दिया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज करूँगा मैं अभी। तो हमको पता है कि हम रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते थे, मैथ डॉट रैंडम की मदद से। ठीक है, अभी का क्लियर है। इसको मैं अगर कंसोल लॉग भी करूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इफ आई जस्ट गो टू माई इंस्पेक्ट पेज, यहाँ पर आई कैन सी आई हैव गॉट द कंसोल। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना तो ये मेरे को एक रैंडम यहाँ पर वैल्यू जनरेट हो रही है, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, एंड आई एम जस्ट लॉगिंग इट। मैं हमारे कंसोल लॉग में देख सकता हूँ कि हाँ, हमेशा जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना तो एवरी टाइम इट इज़ गिविंग मी अ रैंडमली जनरेटेड वैल्यू। बट मेरे को क्या चाहिए, 1 to 10 के बीच में क्या चाहिए, तो मैं इसमें क्या करूँगा, वही जो मैंने अभी 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 जो तुम लोगों ने किया था, हम सेम चीज़ को करने वाले हैं। क्या किया था मैंने इसमें, अभी इसको मल्टीप्लाई किया था 10 से। ठीक है, देखो मैंने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया ना 10 से, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा 2 7 8, ये ऐसे मेरे को वैल्यूज मिल रहे 0 to 10 के बीच में। और मेरे को जीरो भी मिल रहा था, आपने अगर देखा होगा ना कहीं तो भी मेरे को देखो इससे पहले मेरे को जीरो भी मिला था, बाद में फिर से शो करता हूँ। जीरो आ जाओ, देखिए ये मेरे को जीरो भी मिला था। इस केस को अवॉइड करने के लिए, ऐसा केस आए ही ना कभी, इसलिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मैं इसमें एक ऐड भी कर देता हूँ, तो मेरे को जीरो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे, इसको मैं सेव करता हूँ फिर से, अभी मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ ना तो मेरे को जीरो मिलने का चांस ही नहीं है। अब इसको 1000 बार करो, 2000 बार करो, 10 लाख बार करो, मेरे को जीरो नहीं मिलेगा, मेरे को हमेशा नंबर मिलेगा 1 to 10 के बीच में। आई होप अभी का आपको क्लियर होगा, बट मेरे को ये पॉइंट्स वगैरह भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको रैप अप कर दूंगा किसमें, मैथ डॉट फ्लोर में, जो कि मेरे को इसको राउंड ऑफ कर देगा, राउंड ऑफ करने में मेरी हेल्प करेगा। तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, तो अभी मेरे को ये हमेशा नंबर देगा बिटवीन 1 to 10, और वो मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर जनरेटेड नंबर में। फिलहाल के लिए सब सही है गाइस? ठीक है, हाँ तो इतना क्लियर है। तो अभी मेरे को इसको कंसोल लॉग को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कि कंसोल में थोड़ी कमेंट करना है, इस कंसोल में थोड़ी लाना है इस चीज़ को, तो वेब पर शो करना है। तो मैंने क्या कर दिया अभी, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज़ तो समझ गई थी कि मेरे को कंप्यूटर को नंबर जनरेट करना है, एंड हाँ, मेरा यूज़र भी कुछ ना कुछ नंबर इनपुट करेगा। इतना ही तो लॉजिक है, कंप्यूटर ने जनरेट किया, यूज़र ने इनपुट किया, दोनों को मैच किया, आउटपुट दे दिया। तो अभी लेट सपोज यूज़र ने कोई तो भी नंबर एंटर किया, तो मेरे को उसको एक्सेस करना है, तो हाउ हाउ कैन आई एक्सेस दैट? किसी किसी ने तो भी डाउट पूछा था एक कल परसों या उससे पहले वाले लेक्चर में कि हम इनपुट कैसे लेते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ से मैंने इनपुट, यहाँ से मैं वैल्यू को एंटर करूँगा। तो मैंने इस क्या नाम दिया था, एक आईडी दी थी, उसका आईडी का नाम क्या है, क्या एनीबॉडी से इस आईडी का नाम क्या था? सबमिट तो इसका था ना, सबमिट का बटन कर दिया था मैंने, इसका क्या था, इनपुट वैल्यू था। ठीक है, मैं इनपुट वैल्यू से इसको एक्सेस करूंगा, और उसको जो भी वैल्यू इनपुट होगी मैं इसको कहीं ना कहीं प्रिंट करूंगा। वो आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा है ना, तो वो यूजर टर्मिनल में प्रिंट करेगा। अपन ने ऐसा कुछ कोड लिखा ही नहीं कि वो वेबसाइट पे दिखाए। नंबर इज इक्वल्स टू इसको अगर मैं डायरेक्टली तो ऐसे नहीं कर सकता। देखो अगर आप कहोगे कि कंसोल इसको डॉट आप लॉग आप आई मतलब थिंक कुछ टर्मिनल में देखो प्रिंट क्या था करेगा इसका, ना देखो क्या था नंबर इसका, को। अपन ने कोड लिखा ही नहीं, एचटीएमएल कोड, कि वो वेबसाइट पे दिखाए। इनपुट वैल्यू था। तो इस तरीके से तो हम नहीं कर हेलो। सकते। ठीक है, ये तरीका नहीं है करने का कि मैंने इसको नाम दिया था, तो ये नाम जो भी वैल्यू डालूंगा इसमें, ये नाम में स्टोर होगा, और इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, इसको करने का एक सिंटैक्स, एक प्रॉपर तरीका रहता है। अगर मेरे को कोई भी मेरी हाँ, इससे एक मिनट। आईडी से वैल्यूज एक्सेस करनी हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये मेरा पूरा होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है,
ये जितना भी है ना मेरा बॉडी, ये पूरा का पूरा एक वेब पेज का डॉक्यूमेंट है। तो मैंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट जी डॉट, आप क्या कर ले, मुझे गेट एलिमेंट, ये क्या एक एलिमेंट है, तो मुझे मुझे एक इसको गेट करिए इस एलिमेंट को, किस चीज से, किसके रेफरेंस से, बाय इट्स आईडी। तो मैंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट get the element by id, so that's why document dot get element by id। by id तो ऑफ कोर्स इसको मैंने id से एक्सेस किया, तो मेरे को id भी पास करनी रहेगी, तो मैं इसको करता हूँ as that id is, ये मैंने इसको वैल्यू दी थी स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो मेरे को हमने इसको id इनपुट फॉर्म में डाला इसको क्या एक्सेस हमने? करना पड़ेगा। id क्या था मेरा, इनपुट वैल्यू, ठीक है। तो इसने ये मेरे को पूरा का पूरा टैग ही दे दिया। भाई मेरे को टैग नहीं चाहिए, ये मुझे टैग नहीं चाहिए, मुझे इसमें की वैल्यू चाहिए। तो एट द एंड मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ, ये तो मेरा इतना हो गया, मैंने पूरी इसको तो एक्सेस कर लिया, किस चीज़ को, मेरा 90% तो काम हो गया कि मैंने पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर दिया, पर मुझे मुझे क्या चाहिए, उसमें की वैल्यू चाहिए। तो मैंने एंडिंग में लिख दिया वैल्यू। मैंने क्या किया, उस पूरे एलिमेंट डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया, उसके बाद उसमें का डॉक्यूमेंट से एक एलिमेंट लेना था मेरे को, वो इनपुट वाला। तो मैंने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसमें आईडी पास किया, तो मेरे को वो पूरा का पूरा टैग मिल गया। मेरे को पूरा का पूरा टैग तो चाहिए नहीं, मेरे को क्या चाहिए, उसमें की सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो मैंने उसको एंडिंग में डाल दिया डॉट वैल्यू। ईजी है, फर्स्ट टाइम अगर किसी ने देख रहे होगे तो थोड़ा सा मैंने कहा ना, थोड़ा सा आंखों में दर्द होगा, बट इतना कुछ है नहीं। जैसे जैसे आप इसको बार बार देखोगे, यू विल बी गोइंग टू गेट फैमिलियर विद इट। तो मैंने जो भी यूज़र उस इनपुट एलिमेंट में वैल्यू डालेगा, वो जाकर स्टोर होगी मेरी यूज़र जनरेटेड नंबर में, ठीक है। तो आप कहोगे कि हाँ, जैसे मैंने इसको कंसोल लॉग किया था ना, जैसे आपने इसको जनरेटेड वैल्यू को कंसोल लॉग किया, तो हमको इसको भी देखना है कि ये आप जैसे वैल्यू एंटर करते हो वो मेरे को कंसोल लॉग हो जानी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखते हैं वैल्यू को कंसोल लॉग होता है नहीं होता है। कंसोल लॉग करिए आप यूज़र जनरेटेड नंबर को भी, अब देखते हैं कि हमें अभी मिलता है नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पर दो कंसोल लॉग किए, पहला कंसोल लॉग तो कंप्यूटर जनरेट करेगा वैल्यू, और दूसरा कंसोल लॉग, क्या प्रॉब्लम है, तो दूसरा कंसोल लॉग क्या करेगा मेरा, जो भी मैं इसमें वैल्यू एंटर करूँगा ना, वो भी मेरे को कंसोल लॉग में देखना है कि हाँ हम सही से फंच कर पा रहे हैं वैल्यूज या नहीं। मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, कंसोल में जाऊँगा, और आप देखिए जैसे ही मैंने पेज को रीलोड किया ना, मेरे को एक इसने रैंडमली जनरेटेड जो कंप्यूटर ने जनरेट किया वो तो मेरे को मिल गया। मेरे को चाहिए कि यूज़र ने क्या, अगर मैं कुछ डालूँ तो वो भी मेरे को मिलना चाहिए, और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ ना, मेरे को नहीं मिल रहा कुछ भी, सी नहीं मिल रहा कुछ भी। तो ये क्यों नहीं मिल रहा है, कोई बताएगा? कैन एनीबॉडी टेल कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग? मैंने कहा तो है कि भाई इस पूरे आईडी को आप क्या कर लो, इस एलिमेंट को एक्सेस कर लो, और उसमें कि मेरे को वैल्यू कंसोल लॉग करके दे दो, बट ये तब भी नहीं दे रहा है मेरे को। इसका रीज़न कैन एनीबॉडी टेल? क्या आवाज़ कट रहा है तेरा? ओके, वैसे आवाज़ कट रहा था, मुझे इतना कुछ ज़्यादा समझा नहीं, बट हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया। हाँ चार्ट में लिखो, टर्मिनल पे प्रिंट होगा कंसोल लॉग से HTML कोड लिखा है नहीं, नहीं नहीं नहीं, वेबसाइट पर देखने के लिए, नहीं नहीं, मैं वेबसाइट की बात ही नहीं कर रहा, ये हम यहाँ पर कंसोल लॉग में, दिस इज द कंसोल ऑफ द वेबसाइट, ये यू कैन सी द कंसोल। मैंने यहाँ पर ही कंसोल लॉग किया, जैसे मैंने इस चीज़ को कंसोल लॉग किया था ना, सिमिलरली आई एम गेटिंग द रैंडम वैल्यू जनरेटेड, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कंसोल लॉग किया था। सिमिलरली मुझे ये भी वैल्यू कंसोल लॉग में दिखनी चाहिए कि जब भी मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ ना, तो मैं इसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ यहाँ पर, यही है टर्मिनल हमारा।
तो तब भी मुझे नहीं दिख रहा है सच कुछ। सबमिट बटन। ठीक है, जहाँ थोड़ी सी तेरी आवाज़ कट रही थी, या पता नहीं थोड़ा मेरे साइड से इशू है क्या, बट इनपुट डाला था ना। हाँ इनपुट डाला है भाई, ये क्या। ओके, तो मैं इसका आपको बताता हूँ इसमें क्या मतलब क्यों नहीं हो रहा है ये। तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने मेरे इसको रिफ्रेश किया, सी मैं यहाँ पर इसको पेज को रिफ्रेश किया, तो एक ही झटके में ये पूरा का पूरा पेज रिलोड हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा पेज एग्जीक्यूट हो गया। तो नो मैटर, अभी मैं इसमें 5 भी डालता हूँ ना, तो ये मेरा पेज रिफ्रेश या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, इट्स स्टैटिक पेज, इट इज़ नॉट रनिंग। एक बार का रिलोड हो गया ना, तब ये पूरा का पूरा पेज फिर से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इसी के कारण जैसे मैं रिलोड कर रहा हूँ, वो एक्जैक्टली पूरा का पूरा पेज सिक्वेंशियली पूरा का रन हो रहा है। इट इज़ नॉट वेटिंग फॉर मी टू एंटर द वैल्यू। देखिए जैसे ही पेज को रिलोड हो रहा है ना, तो मैं 1 सेकंड में तो झटके में वैल्यू डाल नहीं सकता। जैसे मैं रिलोड कर रहा हूँ वैसे, जैसे मैं रिलोड कर रहा हूँ, मैंने उसने मेरे को रैंडमली वैल्यू जनरेटेड तो दे दी, बट मैंने उसमें एंटर कुछ नहीं किया था एज सच। मैं एंटर कर ही नहीं पा रहा था जैसे पेज रिलोड हो रहा है एट दिस सेकेंड। उसी के कारण आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू हियर। क्यों नहीं मिल रही वैल्यू? क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा वेब पेज रन हो गया और इसमें कुछ वैल्यू ऐसा थी नहीं डाली हुई, क्योंकि हमने उसको पहले से कुछ वैल्यू असाइन नहीं की थी। और मैं दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकता कि जैसे मेरा पेज रिलोड भी और मेरी वैल्यू भी असाइन हो। ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ कर सकता हूँ, और तो कैसे कर सकता हूँ वो अभी हम देखेंगे। दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो मैं क्या कहूँगा कि जैसे ही मेरा पेज रिलोड हो, जैसे ही मेरा पेज रिलोड हो, जैसे तो इट शुड वेट, माई पेज शुड वेट टू एक्सेप्ट सम वैल्यू फ्रॉम पेज रिलोड होने से। सबसे पहले तो हमने ये कर दिया कि ये रैंडम वैल्यू जनरेट होगी, तो उसके बाद माई पेज शुड वेट, इट शुडंट कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, इट शुड वेट फॉर मी टू एंटर द वैल्यू from which is being going to tell the डॉक्यूमेंट डॉट user, गेट so it एलिमेंट बाय should आईडी। wait for the user to enter the value, and then it will और like आईडी में compare the आईडी value में वो and then it should execute. So for that sake, अभी हम इसको अगर ऐसे रैंडमली स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो it is not gonna work. तो उसी के लिए the page should wait, we have to provide a function. हमको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि वेब पेज को इनपुट वैल्यू। बोलेगा कि आप इन इनपुट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ही मेरे स्क्रिप्ट को एंड करना। सो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा लॉजिक तो अभी तक सही था, बट हमने एक चीज़ की मिस्टेक की कि हमने इसको एक रैपअप करना है हमको एक फंक्शन में। फंक्शन में क्यों रैपअप करना है कि वो फंक्शन तभी कॉल होना चाहिए कि हम जब सबमिट बटन पर क्लिक करें या फिर कोई वैल्यू का एंटर करें। ऑफकोर्स मैं अगर कोई वैल्यू का एंटर करूँगा तो मेरे को सबमिट करना पड़ेगा, तो आई हैव टू एक्सेस द सबमिट बटन ऑल्सो। सी, I have to access the submit button also, I have to access this tag also, and this both should synchronously run when the web page is been loaded. The web page has been reloaded, the web page should run till this both values are accessed, been compared and been evaluated, and after that my page should end. So for that sake हमको इसमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि एग्जीक्यूट होगा हमारे सबमिट बटन पर क्लिक करने पर। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, आई विल राइट अ फंक्शन। ये कुछ सिंटैक्स था फंक्शन का। अभी आज सच मैं फंक्शन में कुछ वैल्यूज